Students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions of chapter 8, that is the heritage of India by A.L. Basham from your book Dear to All the Muses. तो चलिए करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया. हेरिटेज ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है. हमारे पास ऑप्शंस हैं इसाक एसिमॉव, H.E. Gardiner, साकी, A.L. Basham. The right answer is D, that is A.L. Basham. Next is A.L. Basham is a dash historian. A.L. Basham कौन से historian थे. कैनेडियन, जर्मन, British और Indian. Right answer is C, that is British. Next is the heritage of India is an extract from A.L. Basham's book. A.L. Basham की बुक जो है कौन सी है जिसमें से द हेरिटेज ऑफ इंडिया एक एक्सट्रैक्ट के तौर पे लिया गया है. That is the origin and development of classical Hinduism, the wonder that was India, and the Anna Vismaya, a cultural history of India. Right answer is B, that is the wonder that was India. नेक्स्ट इज़ द वंडर दैट वाज इंडिया इज़ अ सर्वे ऑफ डैश कल्चर. ये जो बुक है इसमें किस चीज़ का सर्वे के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. अमेरिकन, चाइना, इंडियन, पाकिस्तानी. राइट आंसर इज सी, दैट इज़ इंडियन. नेक्स्ट इज डैश विलेज कल्चर इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया. द वंडर दैट वाज इंडिया बुक में किस तरह का विलेज कल्चर बताया गया है. मॉडर्न, वेस्टर्न, प्रिमिटिव, ऑल ऑफ द अबव. प्रिमिटिव होता है वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड. The right answer is C, that is primitive. Next is primitive villages are in secluded valley of the dash hills about which the writer has surveyed. किस secluded valley कौन सी होती है. secluded means होता है far away from the people and roads, जो बहुत ही isolation में होती है. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ब्रोई, द येलो रिवर, इंडस रिवर, द नील रिवर. ब्रोई. Right answer is that is option A. Next is who advocate the social reforms. सोशल रिफॉर्म्स की एडवोकेसी किसने की थी. मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, राम मोहन राय, जितेंद्र कुमार. राइट आंसर इज सी, दैट इज राम मोहन राय. नेक्स्ट इज हु डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस. ये किसने डिक्लेयर किया था कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस जो है वो सोशल सर्विस है. राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रामानुज. राइट आंसर इज सी, दैट इज विवेकानंद. नेक्स्ट इज हु डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज रिलीजियस ड्यूटी. रिलीजियस ड्यूटी के तौर पे सोशल सर्विस का थीम किसने डेवलप किया था. विवेकानंद ने, राम मोहन राय, महात्मा बुद्ध या फिर महात्मा गांधी. राइट आंसर इज डी, दैट इज महात्मा गांधी. Next is India and European, Indian and European both looked Mahatma Gandhi as dash epitome of religious leadership. Epitome means होता है प्रतीक. नेक्स्ट है epitome of national leader, epitome of political leader, epitome of Hindu tradition. Right answer is D, that is epitome of Hindu tradition. The judgment of European and Indian about Mahatma Gandhi as epitomic religious leader is right. ट्रू और फॉल्स. दैट इज़ फॉल्स. फॉल्स क्यों है. क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो तो समाज में बराबरी के दर्जे की बात करते थे, वो कोई रिलीजियस लीडर नहीं थे. गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन आइडियाज, अमेरिकन आइडियाज. बोथ ए एंड बी आर राइट. और वेस्टर्न आइडियाज. राइट आंसर इज डी, दैट इज वेस्टर्न आइडियाज. नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स वर कंसीडर्ड अनऑर्थोडॉक्स. अपरंपरागत चीज़ें किसको कहा गया. महात्मा गांधी पैशनेट लव फॉर अंडरडॉग. महात्मा गांधी एंटीपैथी टू कास्ट. Both A and B are right, none of the above. Right answer is C, that is both A and B are right. Next is Gandhi believed in fundamental of his ancient civilization, culture, religion or work. Right answer is B, that is culture. Where did Mahatma Gandhi get the idea of women's right? Women's right का idea महात्मा गांधी को कहाँ से मिला था. In the east, in the west, in the north, in India. Right answer is B, that is in the west. Next is Gandhiji succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thoughts towards a popular and egalitarian social order. True or false? Right answer is A, that is true. Next is what was Gandhi's pacifism based on? It was based on the Sermon of the Mount and to Tolstoy. Next is it was based on the Sermon of Mahatmas.
or option C is both A and B are right. Option D is none of the above. Right answer is A, that is it was based on the Sermon of the Mount and to Tolstoy. Next is, how can you say Gandhiji was a typical Hindu? Because of his faith in truth, because of his faith in honesty, because of his faith in non-violence. None of the above. Right answer is C, that is because of his faith in non-violence. Next is, name Gandhi's predecessor who were in revolt. Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, Vivekanand. Both A and B are right. राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट कि बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र उनके प्रेडिसेसर थे जो रिवोल्ट करते थे. In social context, Gandhiji was considered to be an innovator, then a religious or conservative, socialist, or none of the above. Right answer is B, that is conservative. In place of hierarchy of class and caste, Gandhiji laid stress on egalitarian social order, religious aspect, political aspect, aesthetic development of Indians. Right answer is A, that is egalitarian social order. What are few intelligent Indians not willing to do? कुछ intelligent Indians थे वो क्या नहीं करना चाहते थे? To sacrifice some of the effete element of ancient culture, to sacrifice their profits, to sacrifice their lives, all of the above. Right answer is A, that is to sacrifice some of their effete element of ancient culture. Next is, what kind of problem are Indian facing according to the chapter? Are religious and economical, social and religious, political and economic, communal and economical. Right answer is C, that is political and economical. What is safe to predict about Indians? Indians के बारे में predict करना क्या safe रहेगा? The coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of Scorpion. कि जो coming generation होंगी वो unconvincing होंगी और self-conscious copies of Scorpion होंगी. Next, the coming generation will be unconvincing and self-conscious copies of Scorpions. The coming generation will be convincing and unconscious about themselves. Next, D, both A and B are right. Right answer is C, that is the coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of Scorpions. Next is, the Indian men will be rooted in their tradition and aware of the continuity of their culture. True or false? True. Next is, Bhagavad Gita will not cease to inspire men of dash action, service, thoughtfulness, all of the above. Right answer is A, that is action. Upanishad will not cease to inspire men of thought, killing, action, none of the above. Right answer is A, that is thought. भागवत गीता किसके लिए सीज करेगी? एक्शन के लिए सीज नहीं करेगी, एक्शन के लिए. और उपनिषद किसके लिए सीज नहीं करेंगे? थॉट के लिए. राइट. नेक्स्ट इज, व्हाट इज ऑलरेडी पेरिश्ड? Modern culture, social values, ancient culture, or religious values. Right answer is C, that is ancient culture. Next is, what has been forgotten since long? The extravagant and barbarous hectoms of the Vedic age, traditional values, old culture, caste system. Right answer is A, that is extravagant and barbarous hectoms of the Vedic age. Next is, which tales will people still learn? Heroes of Mahabharata and Ramayana, love of Dushyant and Shakuntala, Pauravas and Urvashi, all of the above. Right answer is all of the above. Next is, what has not overclouded India? Disease and poverty, flood and droughts, unemployment, problem of rising price. The right answer is E, that is disease and poverty. Next is, widows have long ceased to be burnt on their husband's pyres. कि जो widows थी उनको काफ़ी समय से जो उनकी husband के साथ सती होने के लिए जो था वो सीज किया जाता था. True or false? True. Girls may not be by law be married in childhood. अभी क्या हुआ कि जो बच्चे हैं उनको, जो गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनको बाल विवाह के लिए जो था वो बाय लॉ जो था वो मजबूर नहीं किया जाएगा. ट्रू, फॉल्स? राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू. द कास्ट सिस्टम इज वैनिशिंग रैपिडली इन इंडिया नाउ. कि कास्ट सिस्टम अभी बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहा है इंडिया में. ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू. द होल फेस ऑफ इंडिया इज altering
बट द डैश ट्रेडिशन कंटिन्यूज। क्या चीज़ है जो इंडिया में अभी भी कंटिन्यू हो रही है सब कुछ बदलने के बावजूद? सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। राइट आंसर इज सी, दैट इज कल्चरल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द heritage of India. So I hope that you might have seen this video till end. See you next time in my next video with a new topic. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe and comment. Have a nice day.